Now we are going to discuss about the important trends in electron gain enthalpy. The first is the halogens have a highest negative electron gain enthalpy. Halogens are group 17 elements, right? As we move along a period, the size decreases. So it means the halogens would be having the least size. They wanted an electron to achieve a noble gas configuration. So the electron gain enthalpy of halogens are negative. How? It is due to the fact that halogens have a general electronic configuration of 1s2, or I would say ns2 np5. They want one electron to achieve a noble gas configuration of ns2 np6. Thus, they have a very strong tendency to accept an electron, and their electron gain enthalpies are therefore highly negative in nature. दे हैव उनके पास बहुत क्षमता है कि एक वो इलेक्ट्रॉन को लें और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें. सो अगर उनके पास लेने की क्षमता है देन दे कैन इजिली रिलीज एन एनर्जी टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट. नेक्स्ट इज द electron gain enthalpy values of a noble gases are always positive in nature. Now we are going to discuss electron gain enthalpy of noble gases. What are noble gases? That is inert gases. They do not want an electron to achieve a noble gas. Why? Because they are already stable in configuration. So अगर कोई चीज पहले ही स्टेबल हैगी है, अगर मैं जबरदस्ती के इलेक्ट्रॉन अंदर पाना है ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ एनर्जी लगानी पड़ेगी, and that energy is a positive one, while those of beryllium magnesium will discuss wisely. So what is electron gain enthalpy of noble gases? As we have know that noble gases, they are having a stable electronic configuration of ns2 np6, right? So this is a electronic configuration of noble gases, and they have absolutely no tendency to take an additional electron. It means that incoming electron enters to the higher principal level and does not feel an attraction. अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आंदा भी है उथे इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगी नहीं. क्यों? वो तो पहले ही स्टेबल है ना. ਆਪਾਂ अगर कोई चीज पहले ही स्टेबल है ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਸੋ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਫੋਰਸ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ. ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਸ, ਠੂਸਣਾ ਪਊਗਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਟੂ ਫੋਰਸ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਟੂ ਐਟਮ, ਐਂਡ देयरफॉर देयर इलेक्ट्रॉन gain enthalpy इज पॉजिटिव. इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ gain enthalpy ਹੋਗੀ ਉਹ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, because the energy is required by us. The next one is your beryllium, magnesium, nitrogen, and even the phosphorus. These values are almost zero. How it is so? Let us discuss from beryllium itself. What is beryllium? It is having atomic number 4. So it has a configuration of 1s2 and 2s2, right? If something is having s electron can accommodate maximum of 2 electron. So it is completely filled 2 electrons. Similarly with the magnesium, magnesium has atomic number 12. It has a configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, right? So 3s2 s orbital can maximum accommodate how many electrons? 2. So as these are having 2 electrons respectively, and they are half filled configuration of the nitrogen and phosphorus. If I say nitrogen, it has atomic number of 7. It would have a configuration 1s2, 2s2, 2p3. So it has a 3 electrons because p orbital can maximum accommodate the 6 electrons. So it is a half filled configuration. Half filled and fully filled configuration is almost stable, and if it is almost stable, then it do not need an electron from outside to make it unstable. So these are already unstable species. That's why their tendency, their attraction power, therefore the configuration show a little tendency to gain any electron, and hence their electronic configuration or the electron gain enthalpies are almost zero. They won't be requiring an electron. Similarly with that of a phosphorus, it has atomic number of 15. It has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. The similar electronic configuration, it has a p orbital that is having a 3 electrons. So it has a very little tendency to gain electron because it is half filled and already a stable configuration.
The next point is fluorine has unexpectedly less negative electron gain enthalpy than the chlorine. Why it has unexpectedly less negative electron gain enthalpy? We are going to discuss about it. As we know, you have fluorine, you have chlorine, you have bromine, you have iodine. Means when we move down a group, size increases. As the size increases, the attraction decreases. So it means electron gain enthalpy has to be less negative. पर क्वेश्चन हैगा कि वाई फ्लोरीन दी कट नेगेटिव क्यों है एज कंपेयर टू क्लोरीन? वाई द फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन? Then how we are going to discuss it? As we know, fluorine has a small size, right? So fluorine has small size. It has small size. Then what? They would be having inter-electronic repulsion. फ्लोरीन पहला ही छोटा साइज हैगा, फ्लोरीन पहले ही छोटा एटम है. अगर छोटा एटम है तो उसका छोटा साइज है. उसमें तो पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में पड़े हैं. तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उनमें क्या होगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी. जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, जिसके साथ हमारे पास जो अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन का वो कम हो जाएगा. तो फ्लोरीन के पास कम नेगेटिव, सो इट वुड हैव अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, the less negative electron gain enthalpy of fluorine is due to very small size of fluorine. As a consequence of small size, there is a strong inter-electronic repulsion. Just we have to remember that they have internucleus or inter-electronic repulsions. ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ क्या कर रहे ਨੇ? रिपेल कर रहे ने. So they have a inter-electronic repulsions which will lead in relative to the compact, as the size is 2p orbital, so it is a very small, and thus incoming electron does not feel much attraction. So there is no attraction between the nucleus and the electron. That's why out of the fluorine and chlorine, it has less negative electron gain enthalpy. So it is an unexpected thing, right? Because when we move down a group, chlorine should have less negative electron gain enthalpy as compared to fluorine. Next our topic is successive electron gain enthalpy. What does successive means? लगातार, एक तो बाद एक. कल आप पढ़िया सीगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि जब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਊਂਗੀ वन आफ्टर अनदर, उसी तरह अगर ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ? that is called as successive electron gain enthalpy. So what is it? The energy has to be supplied again, right? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ. ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਨਾਨੀ ਹਾਊਸ, ਰਾਈਟ? एवरीवन गो टू देयर नानी हाउस. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर नानी हाउस यू विल गेट सम न्यू क्लोथ्स. अगर नवे क्लोथ्स लैके आओगे तो तुसी जबरदस्ती ब्रीफ केस ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਟਾਈਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जिन्ने तुसी इलेक्ट्रॉन पाई जाओगे उन्नी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ. ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन गेन एंथैल्पी है, चाहे ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन अंदर पान ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे दैट विल लीड टू फोर्स यू टू प्रोवाइड एनर्जी टू इंट्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रॉन इनटू दैट ऑफ अ atom. That's why the successive electron gain enthalpy is always going to be positive in nature. That has to be keep in mind. So let us discuss with an example. The first electron gain enthalpy. Suppose we have oxygen. Oxygen atom in its isolated gaseous state. Now I am going to add the electron. It is going to become a O negative. So again it is a gaseous state. The enthalpy is going to be the negative. It is minus 141 kilojoule per mole. So it is the amount of energy released. क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो अपन एनर्जी रिलीज होगी.
पर जब दूसरी बारी करांगे पहले ही ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, सो दिस इज O नेगेटिव. आफ्टर गेन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स O2 नेगेटिव. अगर O2 नेगेटिव होगा तो आई हैव टू पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही ने, ठीक है, जबरदस्ती आप पा रहे हैं तो अपन एनर्जी लगानी पड़ेगी टू इंट्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रॉन. सो इट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट इज 780 किलो जूल. कैन यू अंडरस्टैंड? इट्स सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, द फोर्स रिक्वायर्ड to move that electron from outside to inside, the enthalpy has to be supplied in this case. So in other words, the second electron gain enthalpy would have a positive value, right? Similarly for the oxygen, for the sulfur, or any kind of negative one. So let us discuss some question. Out of the oxygen and fluorine, which is going to have greater negative, more negative electron gain enthalpy, इन्हां दोनों चों किना दी सब तो ज्यादा नेगेटिव होगी. सो एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, ऑक्सीजन पहला आंदा है और फ्लोरीन क्या आंदा है बाद चों आंदा है. जिहदा साइज ज्यादा छोटा होगा उहदे कोल अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी. जिन्ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करन दी क्षमता होगी उन्नी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी. सो इट इज गोइंग टू हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. Hopefully you understood. The second is your out of the fluorine or chlorine, as we have done the exception here now. फ्लोरीन दा साइज छोटा है, दैट्स वाई इट वुड हैव अ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन. पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि फ्लोरीन क्लोरीन ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨॉट adding those electrons. So it would be a kind of positive. So it is less negative electron gain enthalpy as compared to that of a chlorine. So let us discuss one more question. Which element has a greatest negative electron gain enthalpy? So out of that, if you get it, it is a half-filled configuration. This is 4. Of course, it won't be there. And you have a 5 and 5. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੈਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦ 5 ਕੈਨ ਗੇਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਟੂ ਅਚੀਵ ਅ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ. ਅਗੇਨ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਗਾ ਇਟ ਹੈਵ ਮੋਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਂਡ ਦਸ it would have a highest negative electron gain enthalpy. So the answer is going to be C, not D. Why so? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है. अगर साइज बड़ा होगा तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ नहीं होगी इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ. while ਇੱਥੇ हाफ filled है और ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ क्या ਹੈਗਾ 5 electron, so it would be having the highest negative electron gain enthalpy as compared to even the half filled configuration. Hopefully you understood today's lecture. We'll meet you tomorrow with the next topic, that is electronegativity.